Don't skip this topic if you want to gain marks in any of the competitive exams. We have already understood what are jet streams, how do they form, and what are its impacts. Now let us move towards the second part of the video where we will understand about the types of jet streams. Now I told you there are two places where jet streams are formed just because of the pressure difference. अब इसमें अगर wind pattern system की बात करें, so we have headley cell, ferrule cell and polar cell. So subtropical jet streams ferrule cell और headley cell की boundary पे form होता है. Then polar jet stream polar cell और ferrule cell की boundary पे form होता है. First is polar jet stream. ये जो jet stream है ये form होती है in the upper atmospheric layer at the boundary of polar cell and ferrule cell in 60-degree latitude in both the hemisphere. Now ये form होती है because of the strong temperature difference because of the cold air coming from polar latitudes and warm air coming from the lower latitudes, जिसकी वजह से strong temperature difference create होता है and winds become very fast and unstable. That is why polar jet stream is responsible for cyclones and major weather system. Now second is subtropical jet stream. Subtropical jet stream बनता है at the boundary of ferrule cell and headley cell on 30-degree latitudes in both the hemisphere. Now, this jet stream forms because of the temperature difference of equatorial pressure belt and subtropical pressure belt. और इसका major importance ये है that it plays a crucial role in controlling the monsoons of the world. Apart from these two jet streams, there is one more important jet stream that is tropical easterly jet. इसका direction east से western की तरफ होता है और ये देखा जाता है इंडिया पे during summer season. ये बनता है tropical regions में, especially towards 10 degree to 20 degree north latitudes. Tropical easterly jets इन्हीं latitudes पर इसलिए दिखता है because near these latitudes we have Tibetan Plateau. Now Tibetan Plateau की height 4000 मीटर है which is the highest plateau in the world. और because of its height यहाँ पे intense heating होती है जिसकी वजह से temperature difference और pressure difference create होता है. Now because of this temperature difference, tropical easterly jet help करता है इंडिया में बारिश आने के लिए. It strengthens the southwest monsoon और अगर tropical easterly jet हल्का पड़ता है तो monsoon भी इंडिया में हल्का होने लगता है. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जेट स्ट्रीम्स फ्लाइट्स के पैटर्न को इम्पैक्ट करता है, बट दे डोंट जस्ट इम्पैक्ट द फ्लाइट, दे आल्सो इम्पैक्ट द वेदर पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड. कैसे ये पूरे वर्ल्ड में स्टॉर्म्स को गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं रेनफॉल को, एंड दे इवन अफेक्ट द मॉनसून पैटर्न्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स.